Hi guys, welcome back to my channel. In today's video, I'm gonna give you some of the tips for your IELTS exam. So IELTS, how you can secure more good grades in your IELTS exam. But before that, if you are new on this channel, please do subscribe this channel because here you can get the opportunity to do free speaking with us. And also, if you are looking for the free buddies and free speaking partners, then we are here to help you out for that. But what you need to do, you need to subscribe this channel, share this video as share your video with your friend, and also like this video. So what is the video for today? So today's video we will discuss about what else you can use instead of very. So very is the word जो आप बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हो in your task bar के अंदर, जो task bar 1 है और task bar 2 के अंदर, जिसमें आप बहुत ही देते हो कि it was very happy, I was very happy, yeah, that is very fast, yeah, very fast growing, जो ग्रोथ है आप उसको दिखाते हो टास्क बार के अंदर, या फिर वेरी अगली सिचुएशन को आप देते हो, या वेरी ब्यूटीफुल सनसेट और वेरी ब्यूटीफुल सीनरी का आप जिक्र करते हो, या फिर आप बहुत वेरी अपसेट वर्ड को यूज़ करते हो, आई वॉज वेरी अपसेट बिकॉज ऑफ दैट सिचुएशन, और आप किसी बड़ी चीज़ का लोगों को बताते हो कि दैट वाज वेरी बिग और वेरी ह्यूज, राइट। सो इस इन वेरी की जगह पे, या वेरी बिग या वेरी एंग्री या वेरी हैप्पी फास्ट, जो भी हमने अभी वर्ड्स यूज़ किए हैं, तो उसकी जगह पे आप क्या यूज़ कर सकते हो इंस्टेड ऑफ वेरी, बिकॉज वेरी इज़ वेरी कॉमन वर्ड. व्हेन यू आर यूजिंग दीज वर्ड्स इन योर टास्क 1 and 2, you will not secure much grade in there, much score in there. But if you use instead of very something else, like something vocabulary word, one like a good word, then you will definitely secure your marks in IELTS exam. So now let's get discussed. So very first your word is, if we talk about your very big, सो अगर आप बात करते हो वेरी बिग, सो द गैप इज़ वेरी बिग. सो वेरी बिग की जगह आप बोल सकते हो वेरी मैसिव. द गैप वॉज वेरी मैसिव. वेरी एंग्री, आप बोलते हो आई एम वेरी एंग्री, या ही वॉज वेरी एंग्री. सो इंस्टेड ऑफ वेरी एंग्री आप यूज़ करिए furious. He was very furious. He looks furious. He seems furious. Yeah, he seems very angry, right? So very happy. Very happy is ecstatic. So ecstatic means very very happy. So आपने क्या बोलना है? He was ecstatic. I can see the expressions. I can see ecstatic expressions. So very happy expressions on his or her face. Next word is वेरी फास्ट. सो वेरी फास्ट का आप यूज़ करते हो रैपिड. सो रैपिड वर्ड आप यूज़ करते हो जब आप बहुत ही ज़्यादा तेज़ किसी चीज़ का जिक्र कर रहे हो. सो मीन्स कि ग्राफ के अंदर आप बोलते हो कि वेरी फास्ट जो है वो ग्रोथ देखने को मिली, या फिर बहुत ही फास्ट डिप था, वेरी फास्ट ड्रॉपिंग डाउन. यू कैन सी द फ्लो ऑफ दिस ग्राफ. सो उस ड्रॉपिंग डाउन की जगह पे ऊपर वेरी फास्ट ड्रॉप डाउन जो आप बोलते हो, या वेरी फास्ट ग्रोथ जो आप बोलते हो, तो उसकी जगह के ऊपर आप बोल सकते हो रैपिड. सो very rapid growth, we can seems like this year to that year, like 2024 or 2023 to 2024, the rapid growth we can see in this graph, or in the educational field, or the people who is going to abroad. So इस तरह से आप रैपिड वर्ड का यूज़ कर सकते हो जब आप ग्राफ के अंदर आप यूज़ कर रहे हो. सो वेरी अगली, जब आप वेरी अगली इज हिडियस. सो हिडियस के अंदर आप क्या बोलते हो? वेरी अगली. द पीपल इन टास्क 2, जब आप ऐसे राइटिंग करते हो, जब आप किसी जगह के बारे में बता रहे हो, तो उस जगह को आप लेके चलते हो कि अगली स्पेस, या अगली प्लेस, या वेरी कह लो कि हिडियस प्लेस, राइट. सो उस तरह से आप ले सकते हो. या किसी की आप ब्यूटी की बात कर रहे हो तो उसको भी आप हिडियस बोल सकते हो. एंड देन हियर आप बोलते हो वेरी ब्यूटीफुल. द सनसेट वॉज वेरी ब्यूटीफुल. द सनराइज वॉज वेरी ब्यूटीफुल. Just gorgeous sunrise. So I was super. So she looks very beautiful. So she is gorgeous. Instead of very beautiful, you can use the word gorgeous. So very upset. जब आप किसी upset word का use करते हो खुद के लिए या किसी और के लिए, तो आप बोल सकते हो devastated. So that was very devastated. बहुत very devastated. That was devastated. So आप इस एक word को use कर सकते हो. These all are the vocabulary words which is very very useful for your IELTS task 1 and task 2. Before that, if you are new on this channel, please do subscribe this channel. और इसी के साथ ही we will see you in the next video. In next video we will talk about your again some of the important topic which is your IELTS exam students discuss with us. And this is all I have in today's video.
Please do subscribe this channel, share this video with your friends. If you are new on this channel, don't forget to subscribe and share. And if you are looking for the free buddies, and also you need to send your email ID to us, and then we can send you a email invite, and then we can do practice with you. Thank you so much for watching this video till end. See you in the next video. Bye bye.